Hello everyone, welcome to SBI College Youth Ideathon, organized by IIT Delhi in collaboration with the MEPSC and ThinkStartup. As a part of this College Youth Ideathon, then hackathon style idea competition, we are having several founder meetups, and today we have with us the Mr. Arun Pandit, or should I say the Arun Pandit. He's a distinguished figure in the logistics and supply chain management sector. He has founded Don't Give Up the World, a motivational platform that has inspired millions of people across the globe. And he's also a visionary founder and entrepreneur for several other initiatives, and he has played pivotal role in various startups. Hyphen SCS is one of his own startups that he has been working recently. His expertise spans across critical areas such as sales, marketing, business development, and others, where he has consistently leveraged his knowledge to drive innovation and efficiency. Today, we are fortunate to have him here to share his invaluable perspectives and wisdom regarding the entrepreneurial journey and challenges faced by entrepreneurs in the initial cycle. And I should apologize if I was not able to do justice to your profile, sir. So, It's yeah, okay. please. So, over to you, sir. For the participants, you may please switch on your videos and you can keep yourselves mute during the meeting process. Towards the end, we'll start a Q&A round. Then you can pitch in your questions through the chat or by unmuting us. Over to you, sir. Thank you, Gaurav, for the warm introduction. What I'll suggest is, since there is a limited audience here, I am pretty much open to, you can basically crafting the discussion as per what is the need of the audience. So I can, of course, talk about my journey, but if there are certain specific problems that they have, then, or you can say solutions or an area which they would like to Yeah. have some idea or perspective, then Mhm. probably it would be more meaningful to them. So pretty much That would be open with. great, sir. That would be great. So, for a start, what we can do is we can have your initial brief journey, like what are the challenges that you faced, and how did you bring up your several of your ventures, including social venture as well as commercial ventures. How do you bring those up? And then the students can put in pitch in their questions or pitch in their ideas and take your inputs accordingly. Got it. So what Yeah. I'll do is in initial, you can say maybe 5-10 minutes, I'll run you through my entrepreneurial journey and how it went, the ups and downs, and currently what we are doing, the key challenges that we face. I'll try to wrap it up in another probably 10-15 minutes. Post Mhm. which, what I'll do is I'll keep the floor open to specific questions from the team, from the students here who want to, or maybe exploring getting into entrepreneurship or want to have a taste of it, or they're just trying to understand whether they can do it, they cannot do it, Mhm. or maybe certain questions which they do not have the answers. The answer are not, you can say, easily available over the internet, because a lot of the time, a lot of the minute nuances are not discussed in open platforms. And so this will Yeah. give them an opportunity to ask questions which people generally don't talk about much and who And might not many be. times we are looking for some objectivity in answers which are not available online. Some Yes. contextual objectivity. Yeah. Got it. So see, my name is Arun Pandit, and like Gaurav said, I'm the co-founder of Hyphen SCS. Hyphen is India's biggest warehousing and fulfillment platform. We onboarded somewhere around 57,000 warehouses, physically verified across more than 400 plus cities, amassing a total area of 1.1 billion square feet. This number is not only the highest in the country, but probably the highest in the world when it comes to warehousing as a niche, as a domain. And at an overall level, the government India's apex body, WDRA, has got data of around 5,600, 5,700 warehouses. We have got almost 10 times greater than that. So this gives you the overall context where we stand even at an early stage. As an organization, we have raised somewhere around $2 million of seed fund, and last fiscal year we did a revenue of around 8 million. We are projected to cross or be at least near to 100 CR revenue this financial year at an EBITDA positive level, and hopefully trying for a net profitable level. Hyphen SCS is one of India's most recognized early stage and awarded early stage startup. We are part of Your Story Tech 30, which is the apex list for the top emerging startups in India. We were the winner of What an India Challenge. So we won a cash prize of $10,000, somewhere around 8.7 lakh rupees across all categories. We were winner of the South Asia ICT Award.
We were winner of Dun& Bradstreet Startup Trailblazer Award. We were top 20 in Stanford Seed Spark program. We were top 5 in 80 Now Leaders of Tomorrow, Leap to Unicorn, and multitudes of other, you can say, prominent startups competitions, which were held not only in India, but countries like Israel. We were part of Mass Challenge Israel. We were part of South Summit South Korea. We were part of Sushi Tech Japan, and we were part of On Deck and Flexport USA. So at an overall level, we have been recognized and appreciated, not only in India, but across the globe, which gives us further confidence that at least we are doing something right. Because when people from around the world with different perspective and different understanding about the market vet you, so it gives you confidence that at least we are in the right direction. Now, I'll just talk you through my journey of getting into entrepreneurship, and it starts when I was probably in fourth standard. So at that particular point of time, I had not even heard the word entrepreneurship anywhere. Forget about knowing what it means. So I used, yes, IPL. Everyone knows IPL. Yes, sir. So जब मैं fourth में था ना, so what I used to do was I used to conduct IPL like tournaments from fourth till eighth. I mean, it was not IPL at that particular time. There was nothing, no concept called IPL, but we used to conduct cricket matches, tournaments. In this tournament, I used to collect, you can say, membership fees from every team. So every team used to pull in some money. With that money, I used to buy tennis balls from. I used to live in RK Puram, Sector 3. It's nearby to IIT Delhi. And so I used to buy tennis balls at a cheaper price from the RK Khanna Tennis Stadium. It were tennis balls, and I used to get it in 10-15 rupees apart typically. And if you buy it from market, it was around 25 rupees at that particular point of time. So you used to save 10 rupees, which was almost 40% of the cost. And the quality of ball was better, because for tennis, the quality was better as compared to the other balls. So I used to get multiple teams from different squares. We used to live in the government quarters. So there were squares which were there. Every square had a team. And so onboarding 10-15 squares, getting a membership fees. From that membership fees, crafting out a prize pool, first, second, third prize, and also crafting out money for, you can say, ball and other things which would be required in order to manage those things. So conducting the tournament, managing the cash flow, and then making a profit over it. So to me, that was some kind of, you can say, initial flavor to entrepreneurship. In today's parlance, at that particular point of time, it was more towards business. Then post my schooling, I faced a small lump of time. So, for example, one odd year when I was from 11th to 12th, it was a time when I was facing continuous failures. So it was failures after failures. Does anyone know hit me doll? Hit me doll, पता है सबको क्या होता है? Hit me doll. जब आप छोटे होंगे, आपने देखा होगा जिस इसके नीचे सैंड भरा होता है एंड उसके ऊपर से कार्टून का फेस बना होता है, जोकर का, एंड यू पंच इट. तो वो पंच करते हैं तो पीछे जाता है, फिर वापस आ जाता है, बिकॉज बेस में वेट ज्यादा है, ऊपर एयर है. किसी ने देखा होगा, बचपन में देखा होगा. आई थिंक आई डू नॉट नो वेदर दिस इज प्रेवलेंट राइट नाउ, बट हमारे टाइम में वो हर बच्चे को कभी ना कभी Yes, sir. छोटी Yes, उम्र में sir. वो मिला होता था. तो उसको यू पंच इट और वो वापस ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसके बेस में वेट होता है, ऊपर वो एयर होता है. तो यू ऐसा पंच मारोगे वापस आ जाएगा. तो आई फेल्ट दैट माई लाइफ वॉज लाइक ए हिट मी डॉल. मतलब मैं कुछ भी कर रहा था ना, तो I used to fail, but I used to get up. Then again, I was punched. Again, I used to get up. But the whole thing was I was keep getting punched on the face, but I kept getting up. But everything I put in my heart and soul, even after working, unfortunately went off. मतलब कुछ भी कर रहा था, खराब ही हो रहा था. होता ना कि जैसे क्या कहते हैं आपके यहाँ पर ना, पनौती, जैसा यूज द वर्ड पनौती, पनौती वाला टाइम चल रहा था. So and I cleared IIT screening when I was in 12th. I am from Scenic School. It's very difficult to clear IIT screening from Scenic School because there is no coaching and overall routine is also very tough. But I got mumps during my board examination. I got hospitalized. I fainted in the examination. Long story short, I got a compartment in 12th. Although when I was amongst the toppers in 10th, was that regional NCS scholarship winner due to the ill health. Now, ill health doesn't reflect on your marks. Score in your mark sheet. Nowhere it's mentioned that you were sick or any other things. The marks are marks. They are black and white. There is no gray there. So unfortunately, no matter what your situation is, that remains to stay with you across your life. So, I got. I was not selected in NDA written thrice. I got compartment twice, despite doing my earnest best and having a good prior track record.
So I thought that I'll commit suicide. So I went to the river Bias. I belong to Kullu Manali, Himachal Pradesh. I went to the river Bias. I didn't know how to swim, so I thought that I'll jump up. Jump into the river since I don't know how to swim, and river Bias is infamous for even हम killing the best register of the करके कर लिए in the best. It is infamous for killing even the best of the swimmers because there are a lot of stones there. The speed of the river is very fast, so it is difficult to survive there. So at that point, I dropped a message to all of my friends. I said that I tried my level best, but unfortunately, no matter how hard I try or how much hard I work, everything is going in the reverse direction. It was like जितना ज़्यादा मेहनत कर रहा था उतना खराब रिजल्ट आ रहा था ठीक है उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा था so I had decided to commit suicide. Then suddenly one of my friends messaged me. It said that I was crying of having no shoes until I saw a man without feet. I was crying of having no shoes until I saw a man without feet. Take this world as a challenge, prove your mettle. Then another friend messaged that maybe there is some mistake in the marks which is there. For example, put in evaluation because when I got compartment, I had got around say 19 marks, which was there. I think for compartment you need to have 24 or something like that. Uh, and when I again reappeared, I got 7 marks. So they said that maybe there's some mistake. It is 67 or maybe 57 because you are very good with that. So that first message first gave me hope that okay, I am at the current juncture, I am feeling very sad just because I'm unable to clear some papers or there's a rough patch which is going on, and I should be grateful to the things that I already have because a lot of people in the world will be more than happy to switch places with me in a fraction of a second. So that gave me some gratitude first, that I have to be grateful for what I have, no matter what the situation is. And then the second thing gave me hope that maybe there is some technical error, there is some typo error or something like that happens from time to time. So from that instance, I got up and I again tried, started from the very beginning. In 12th, I got 51%. 51% is considered to be an auspicious. 51 is considered to be an auspicious number in Hindu mythology. किसी को शगन देना होता है वो होता है. But believe me, if it is in your mark sheet, it is not the auspicious number you would like to see. So it becomes very challenging at an overall level. But I started rebuilt from the starting. Although I had to start from scratch, but I didn't forget the importance of that message which was there because it gave me a new ray of life. And so I started an SMS group which was called Don't Give Up. At that point, SMS internet was not very prominent, so SMS groups were there. Through the platform was SMS Gupshup, which is owned by Webaru, which is a unicorn right now. It is one of India's biggest SMS related platform. And so I started a group. Every day I used to send motivational quotes. So small quotes with the author name, say, make every obstacle an opportunity, be the change you want to see in the world. Uh, First year, I got all my friends on the platform. There were 200 odd people there. I used to send message every single day, motivational quotes, and they used to get it over SMS. So they used to say, "Arey English, kitna English dal rahe ho yaar?" Other people used to make fun. Some people used to appreciate. Some people used to say that, "Oh, itna English, मतलब ये कौन बंदा है?" ऐसे कर. So they were both parts of it. Some people appreciated it, some people didn't. But first year it had 200 members. Second year, what I did was, in order to engage the community, I asked people to share any good quote that they have seen, and I'll send it to the community. I'll mention who has shared it. Say for example, Ritik. So Ritik might have sent me a quote. So I'll say that say the quote is "Make every obstacle an opportunity" by say Lance Armstrong. Now I will say shared by Ritik Raj. So I used to share it like that. So this got a lot of traction. Now everyone started sharing me the quotes because I used to mention who has shared. So it built in the community. People started creating their own unique names. For example, अभी आपका user name होता है ना, कोई smart boy लिख देता है, कोई intellectual लिख देता है, कुछ भी लिख लिया, whatever. So people started creating their own name. Just for example, motivational Mansi or inspirational Sonali or whatever. It's like that. I mean, uh, और एस्पायरिंग आराधना, ऐसे लोगों ने अपने निकनेम सेट बना दिए. सेकेंड ईयर द मेंबर बेस ग्रो फ्रॉम 200 to 3500 मेंबर्स. सो मेरे को बहुत अच्छा लगा. 200 से 3500 यू इट्स 17 fold increase. So people, I was happy. Third year, the third year, by year 3.5, I had 1.5 lakh members.
So 1.5 from 200 to 3,500 to around 17, 20,000 by end of third year, and then it spiraled to 1.5 lakh. So sometimes what happens is you have to be very persistent in what you are doing day in and day out in order to reach to a particular place. You don't have to give up. You never know. Nothing moves for 2 to 3 years, and eventually one day everything gets spiraled. So I have seen it multiple times. I run an Instagram page called Don't Give Up World. I used to post quotes every single day. उसमें 8-10 like आते थे, views आते थे, maybe 100-200 views. But I used to do it on a daily basis. A few months back, one of my video got viral, and it got 10 million views. Now, in the past 4 months, I have seen almost 50 million plus views over Instagram and multiple million views kind of posts. So you need to keep on doing it, and you also need to keep on improvising, because every time you do, you learn. ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा. So it's not that doing it blindly. You need to see what works, what doesn't work. You need to experiment, and you never know which one would click. But you have to put it in the process that करना है, analyze भी करना है. You keep on experimenting. Experiment it till a certain period of time. It's not necessary कि एक बार करके ही experiment हो जाता. You have to do it consistently for a certain period of time in order to either write it off or put in all attention to it. So started with this. Then I thought that okay, quotes have got very limited, because text में ना SMS पे word limit था, word character limit रहता है. So now different people have got different motivational needs. Mitali would be maybe motivated by a poem. Anag would be motivated by a wallpaper. Say Richa would be motivated by a motivational song. Raj would be motivated by a, you can say, motivational T-shirt which has got a very good tagline over it. So different people have got different motivational need. So I thought that SMS has constraints. First, you can only put in quote, and there are character limit, and it doesn't cover the motivational preferences of all the people. Then what I did was I thought that let's make a website. Website बनाएंगे, ठीक है ना. Website में you can put in quotes, you can put in wallpaper, you can put in videos. मैंने caller tunes भी डाली हुई थी, codes of caller tunes, जिसको anything and everything related to motivation. So it was like a one-stop solution for anything, for everything related to motivation, so that any person who comes in, irrespective of their motivational preferences, they will get something or the other which will help them get inspired. So after that, and अब बनाना तो था, but I didn't know how to make a website. मेरे को website तो बनाना आता नहीं था. Although I joined as a computer science engineer. I was doing computer science engineering. So I thought that website बनाते हैं. उस time first year वगैरह में ना कोई website बनाने का course नहीं होता था. Even HTML, CSS वगैरह नहीं सिखाते थे. So there was no particular course directly involved to the academics which was pertaining to website development or server management. So I asked one of my friends. I didn't have a credit card. One of my rich friends, I told him कि तुम्हारे पास credit card है, I want to buy a domain. So GoDaddy at that particular point of time was only available in US, not in India. So GoDaddy.com से domain खरीदा, Don't Give Up के नाम का, Don't Give Up. अब जब खरीद लिया मैंने, तो मैंने I learned some HTML and CSS. मैंने कहा HTML सीख लिया, I'll make the website on my own. I was not aware of multiple things. So when I made some basic website with some quotes and wallpapers, videos integrated there. Then I realized that मैंने कहा स्पेस कहाँ है, where do I put in this content? ये वेबसाइट जो बनाई है डालूंगा कहाँ पे? So I was not even aware कि domain, when you buy a domain, you don't get space with it. I thought that domain के साथ ही space मिल जाता है, ठीक है. I was not even aware of that. फिर मैंने कहा अच्छा यार space अलग से खरीदना पड़ता है. ओहो यार ये तो नया चीज आ गया. Then I purchased you can say web space. उसके वहां से eventually I was coding but I later on realized that it's very difficult because I want hundreds and thousands of posts there. I cannot code everything, every single post into it. Then I got to understand, okay, there is a concept called content management system, WordPress, Joomla. I learned WordPress and Joomla. Then eventually, over a period of time, I got the website to more than 10,000 plus content, stories, wallpapers, etc. Got more than 8 million organic hits without spending a single rupee. Was selected amongst the top 12 social innovations in India by Test Mumbai. Was featured on the cover of Career 360 magazine special edition on Hope, April 2012 issue. It was researched by Microsoft India in how SMS-based communities are impacting morale and mental health in the country. So a lot of accolades we got there. Now, the point that I want to raise is, and it's not just about my story, the point that I want to raise is if you want to start anything, you should have at least one of these two things. One is passion
Because if you're passionate, if you're connected about something, then you will do it irrespective of what the situation is. And even if you don't know anything, if you're really passionate about it, you learn it. Because I didn't know coding, I learned coding. I didn't know that how to buy a domain, I bought the domain. I didn't know that there was space available, I figured it out. I didn't know that there is a concept called content management system which makes things easier. I learned about it. So if you are passionate about it, irrespective of whether you know it or not, you will either learn it or you will find a way. It's like when the student is ready, the master will appear. The famous quote from Kung Fu Panda. The other thing is about skill set. So if you are skilled at a particular thing, skilled in the sense relatively better skilled as compared to other people, then what happens is you end up doing good work. When you end up doing good work, eventually you start getting appreciated, or you create a niche out of yourself that this person is significantly better than other people. So you're able to create more impact. Once you start creating impact, you get encouragement, you get accolades, and eventually you start building a passion towards it. So if you are passionate, you can learn the skill set, because the passion will push you in learning the skill set because you need to get it done. If you got the skill set and you continuously do good work, eventually to the appreciation and the value that you're adding, subconsciously you become passionate about the things. So one of these two things are important. In ideal case, both of them, but even if one is there, that should also work. So my second venture was into momos. So I started a startup called Poku, which was similar to Wow Momos, which was there. I had a few outlets. Uh, it was it was very famous. We got a lot of awards, accolades. It was a street food startup. But the thing that I did wrong was I didn't get full time into it. One of my partner got full time into it. I didn't get full time into it. I thought that when the business will start earning good profitability and can absorb my cost, then I will get into. So despite putting a lot of efforts, being a lot of very famous, eventually we had to close it down, because what happens is, see, startups seems very glamorous. You get fancy designation, सुनने में अच्छा लगता है, startup है, CEO है, founder है, this that, but it is a very difficult job. It is a very, very difficult job. So you cannot, with part-time efforts, you cannot create a great venture. Part-time efforts would lead to part-time results. Even if you put in your full efforts, then also success is not guaranteed. So you can very well imagine that if you're putting in partial efforts, of course, for testing the water, for having a basic understanding, if you want to try, that is okay. But once you make the decision that you want to get into it, then there is typically, you have to get into it full time. Do not make a plan B that disturbs a plan A. So what happens is, it's a risk. I mean, you have to go all in. And if you yourself are not confident that this will work, then why will anyone else join you? Why will any founders join you? Why will you get another co-founder? Why will investors invest in you? So you need to have skin in the game for other people also to see that they are completely dedicated to the cause. And plus, it requires everything. So it requires everything. I mean, it cannot be, you cannot create a successful startup by giving less than your absolute everything. And it's not just an absolute everything is also not enough. You have to continuously grow. The biggest, I think, earning that a startup founder has is the learning. What I've learned in 10 years in corporate life, I have learned 10 times more than that in my 2 years of startup journey or 3 years of startup journey. So that learning is endless, and that earning might not be quantified into immediate equity or value, but the kind of value that you can generate from it is 100 times more than what probably you can do it from any other place. So one needs to understand the startup is not just about creating value to the ecosystem or creating value in terms of financial terms. It is also what you eventually become and how you evolve yourself. So that is very, very important. Now, my second startup was into supply chain. So I joined a company called Blackbuck, which was recently listed in the stock exchange, and I was heading the SME vertical there. So I was in Blackbuck, then I joined a startup called TruckSap, then I joined a startup called Loadshift. So I worked across multiple supply chain startups, and I did pretty well there. I had very good connections across the country. I was growing at a pace which no one else was growing, had good connects, doing it profitably and scaling it at a very rapid pace. So although supply chain was not my passion per se, and it was not that I was keen on having a career in supply chain, but while doing it, and I realized that supply chain talent was poor in the country, and when I put my heart and soul into it, I was
able to get results which other people were not able to get. And that's why I started to get distinguished amongst other people. And eventually I got to understand more about the problems, and I realized that these are the problems which are worth solving. These are the problems which can create an impact not only to the industry and the country, but at an overall level to all the different stakeholders there. So supply chain I started because of the problems that I understood while working in the domain. So while working in the domain, I realized ye bhi gap hai, ye bhi gap hai. So it's like once you suffer those things, whether it's personally or professionally, you are able to understand. फिर आप बोलते हो ना कि यार ये कोई क्यों solve क्यों नहीं कर रहा, ये कोई भी solve नहीं कर रहा है, nobody is solving it. इतना बड़ा तो market है, इतने challenges है, but nobody is working towards it. So eventually I realized that warehousing, the domain in which we work, has been a laggard with respect to digitization. Most of the you go to a property portal, 90% of the time you'll reach out to a broker and not the warehouse owner. Information shared is not accurate because there is no exclusivity contract in India. तो लोग बताते नहीं है ताकि बंदा उनको बाईपास करके डायरेक्टली ओनर के पास ना चले जाए, ताकि ब्रोकरेज, क्योंकि इंडिया में प्रोफेशनलिज्म की कमी है, trust deficit in the overall market, so people want to keep their cards very close to their heart. So that is how these things typically operate. And what I realized was that there are so many challenges. India is evolving at a fast pace. Everything is getting digitized, but there has been no major innovation in this domain. And there's a lot of inefficiency also. Supply chain cost, direct indirect cost in India's GDP is 12 to 14%, direct and indirect combined. In a developed country, it's 6 to 8%. So India's operational efficiency is almost half of a developed country. So you can very well imagine. And if you want to focus, India is growing very fast. Now we want to become the third largest economy of the world. We want to become an export hub. We are focusing on Make in India projects. But unless and until your supply chain is efficient, first of all, you'll not be able to provide those deliveries on time. Average kilometer run in India is almost half of what a truck runs in US. And apart from it, the cost factor also. If your cost is almost double, supply chain cost is almost double, that will reflect on your pricing, overall pricing, and that will make your product less competitive as compared to other countries. So it's a competitive market. So you have to be efficient in all regards. So I thought that this is a place which has been a laggard with respect to digitization. There are no pan-India kind of players. There is no innovation done even by the biggest of the IPCs. And there is a lot of scope of efficiency which is available there. So we started working on this concept that let's try to digitize, automate, and optimize the warehousing segment, starting with searching a warehouse, capturing data of physically verifying the warehouses, capturing data on more than 40 plus parameters, scheduling a visit online, upgrade. Most of these warehouses are not standardized. Upgrading these warehouses, whatever gap is there, creating a software solution so that they are better able to manage these warehouses. So at an overall level, Hyphen SCS is creating a platform which becomes a de facto platform for anything and everything related to warehousing. And so it educates people and it also helps get these things done, because most of these people are unaware of it. There are about 10 lakh warehouses in India, more than 7 lakh warehouse owners. So you can very well imagine how fragmented, and less than 2% of these warehouses, before we started, less than 2% of the warehouses were available online. That means on a platform, maybe a property portal, maybe just dial or other places. Now it is around 7%. Still, it's not even 10% of the total warehouses in the country which are available, listed online. Forget about available online. And if you look into the software solutions, because most of these warehouses are used for storing materials and delivering material, whether it's e-commerce, whether it's non-e-commerce, uh, around, you can say around 90% of these warehouses don't have any you can say software solution to manage these things. So they are relying on physical registers, maybe Google Sheets, Excel sheets. For billing, they might have Tally and other thing, but they do not have a proper, you can say, operation related solution which helps in manage, bring visibility, and optimize this warehouse. So we also created Warehouse Book, which is a one of a kind solution which looks into inventory, transportation, manpower management, maintenances, repairs. Basically, it's kind of operating system for smaller warehouses, so they can manage the entire warehouses on their own. So
So, This is, yeah, I'm sorry if I may interrupt you. no, please. The idea that you shared, the hyphen SCS, that was quite clear. We could understand that when you were working in corporate and other startups, you realized Yes, that there is a gap in the industry and you can do something about it. And you just started something and you just conceptualized an idea and how can you take it further. That's how you planned it. But I yes. could not understand one thing. When you started Don't Give Up World, what was the motivation behind that and what kept you going regarding that particular aspect? So, see, Don't Give a World was like I told you, that it was driven more by passion, Mm-hmm. based on personal experiences, because at one point of time I had faced multiple failures on a regular basis, and I thought of committing suicide. It was more towards mental health. It Yeah, was because everyone faces some or other challenges in their life, and at true, some point of true. time people either give up if they do not have a strong support system, friends. So they might eventually end up either losing their confidence or in grave circumstances even losing their lives, because they feel that they are unable to add value or do anything significant, and Mhm. they basically consider themselves not worthy of living. So that Don't Give Up was more towards that passion. It was to spread the word of hope and optimism, because at one point of time I had gone through the same circumstances. So Mhm. typically the people who have faced the challenges are the first ones to understand the exact gravity of the challenges, and I wanted to spread the word in order to reduce such happenings which are there. So in that platform, we were trying to get online psychological counseling. We partnered with Your Dost, which is the biggest platform for online psychological counseling. Then we wanted to do webinars with prominent speakers. Right now, Zoom, etc., is very prominent. But before that, we were trying to create a webinar system in which we will carry, you can say, cameras to schools and colleges. We'll do a broadcast from one, say we get in Kapil Dev or Sachin Tendulkar, we are shooting him in one particular place, and all other, say 10 schools, we are doing a live broadcast of it. They can ask the questions. उस टाइम ये जूम गूगल मीट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. तो उस टाइम हमारा ये था कि जैसे वेबएक्स वगैरह प्लेटफॉर्म के थ्रू वी विल डू इट, सो दैट the tier 2 tier 3 cities who do not have access to these people, internet उस time इतना prominent नहीं था, so they'll be able to experience what the top, you can say, dignitaries in their fields do. They will be able to ask the question, they will get motivated, Mhm. they will get role models. ऐसे सबको पता है कि सचिन बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन उनकी जर्नी कैसे उन्होंने ग्रो किया, so that they get motivated in order to get things Yes. done. So that was a broader, so it was a social platform, it was a non-profit platform, but the intent was to create better mental health, and specifically focusing on tier 2 tier 3 cities in which such kind of experiences were rare, and that helps them meet people who they are unable to meet in their lifetime, and they get inspired by them. So that was a broader context for that venture. Okay. And sir, I'll just ask one more question from my side, Please. and then we'll open the floor for the other students to ask their question. So I'm a starter mentor. Come across a lot of questions like, "Sir, मेरा idea चोरी हो जाएगा. If I let out my idea in public, if I tell my idea in front of others, so others will copy my idea." So, what is your message regarding that? How would you answer to those queries or those insecurities about getting their idea theft? See, first of all, the idea belongs to the one who executes it. इट्स सिंपल, प्लेन एंड सिंपल. आपका कोई भी आइडिया अगर आप सोच रहे हो कि वो आप ही ने सोचा है, तो आप यू आर अ बिगेस्ट फूल, बिकॉज दैट यू हंड्रेड्स ऑफ पीपल वुड हैव थॉट ऑफ दैट आइडिया इन एट थॉट पर्पज से, तो हजारों लोगों ने सोचा होगा. Hundreds would have executed it to a certain extent, Mm. and most of them would have failed. So if you are feeling that you have got a particular idea which is as unique as anything and no one has ever thought of it, then you are sadly mistaken. And ideas are dime a dozen. There are hundreds of ideas floating. It's about execution. It is about, are those ideas scalable? Can you create a venture out of it? Can you create a profitable venture that can be scaled out of it? That is the biggest challenge. So I wrote a quotation on over LinkedIn, and that read the same thing, which is, uh, we talked about the fact that idea belongs to the one who executes it. देन वन ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिस्ट जो मेरे कनेक्शन में भी नहीं थे, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि दैट मीन्स थ्योरेटिकल फिजिस्ट का कोई लाइफ का जीने का कुछ मतलब ही नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट डू एनीथिंग प्रैक्टिकल. सो दे आर रेयर सर्कमस्टांसेस वेयर people, for example, theoretical physics, they have to work on the theory part of it. So most of this execution is done by someone else. But at a broader level, when it comes to startups, have you seen any person being awarded and recognized for saying that, okay, he gave a very good idea?
देर से बहुत अच्छा आइडिया दिया, या और समवन गिविंग क्रेडिट टू अ पर्सन फॉर टिपिकली that there is a person who is giving ideas in an organization, उसके लिए अलग से पोस्टर यार, visionaries which are there but typically they come from founders and core team. But see, कोई सा भी आइडिया, इट्स डिपेंड्स अपॉन एग्जीक्यूशन ओनली. नो आइडिया इज अनलेस एंड अनटिल इट्स एन आईपी. कोई आपका प्रोडक्ट आप बना रहे हो, कोई सर्विस बना रहे हो जिस पे आपका कोई स्ट्रॉन्ग आईपी है, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, पेटेंट है, ये कुछ है, उस केस में आपको उसे थोड़ा प्रिजर्व करके रखना पड़ सकता है सो दैट इट डजंट गेट इनटू पब्लिक डोमेन बिकॉज यू वांट टू मोनेटाइज दोस पर्टिकुलर थिंग. But that is more you can say applicable for products and services which are patentable first, and that patent should also have a business sense. आप बहुत सब चीज के पेटेंट अभी भी बना सकते हो लेकिन उससे कोई बिजनेस नहीं आएगा, कोई धंधा नहीं आएगा. तो पेटेंट भी वही करो जिसको कहीं पर यूज होके एक वैल्यू क्रिएट हो पाए, यू आर एबल टू मोनेटाइज. पेटेंट आप बहुत सब चीजों के बना सकते हो. आई एम ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर. मैंने लाइट फोटोग्राफी में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है, लेकिन उसको मैं मोनेटाइज कर सकता हूँ? नहीं, मैं उसको मोनेटाइज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पर्सनल गुडविल के लिए कि मैंने बना रखा है. तो द थिंग इज दैट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, सीधे एग्जीक्यूशन पे जाओ. कोई बड़ा प्रोसेस पेटेंट या आपने प्रोडक्ट पेटेंट बनाए हैं उसे हाइड करके रखो टिल द टाइम यू गेट ए पेटेंट. एंड दैट टू दैट आई अगेन रिपीट, दैट टू इफ दैट पेटेंट हैज द कमर्शियल वैल्यू एसोसिएटेड विद, उससे इतना एफिशिएंसी ऐड हो रहा है जिसके बेसिस पे यू आर एबल टू मोनेटाइज इट. अगर उसे मोनेटाइज भी नहीं कर पाओगे तो भी उस पेटेंट को बस, हाँ ठीक है मैंने कोई पेटेंट बनाया, वो आपको अच्छा लगेगा दिखाने के लिए, For namesake. लेकिन फॉर नेम सेक, ठीक है, मैं नेम सेक के लिए ठीक लगे. जैसे फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ पीपल, अभी लॉट ऑफ बुक पब्लिशिंग हाउसेज आर देयर, you give them 25,000 rupees, they will publish your book, they will give you 10-15 copies, तो हर बंदा ऑथर बन जाएगा, ठीक है ना. लेकिन ऑथर बनना अलग बात है, और एक मीनिंगफुल ऑथर बनना जिसकी किताबें और भी खरीदे हैं, जिससे वो कमा सके, रॉयल्टी कमा सके, वो अलग चीज है. इट्स सिमिलर टू दैट थिंग. सो इफ योर पेटेंट डजेंट ऐड वैल्यू और बिजनेस सेंस, तो वो अपने ठीक है कि हम पेटेंट वाले हो गए, लेकिन लेकिन जब तक उसका सेंस नहीं बनेगा तो इतना कोई खास फायदा नहीं है. सो आइडियाज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो आप. अगर आपको एक थोड़ा सा टेस्टिंग करना ना, आप सारे बंदे मुझे एक एक आइडिया बता दो, मैं आपको उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी बता दूंगा बिना आपसे सुने हुए कि वो कहाँ कहाँ पर किस लोगों ने उस तरीके का वहां पर पहले एग्जीक्यूट किया हुआ है. मैं आपको नाम के साथ बता दूं, आप सारे के सारे बंदों का कोई भी ऐसा आइडिया नहीं होगा बिना आप लोगों से बात सुने कि जो, जैसे आप कह सकते हो ना कि यूनिक यूनिक इन इट सेल्फ होगा. यू कैन वेरी वेल इमेजिन. तो मैं हूँ, अब आप सोचिए और जो सीनियर लोग हैं, जो वीसीज हैं, वो तो हजारों पिचेस को सुनते हैं, तो दे विल बी इवन मोर मैच्योर. उन्होंने तो हमें से भी ज्यादा आइडियाज देखे होंगे, उनके पास तो उनके पूरे बिजनेस प्लान आए होंगे. Mhm. सो डोंट गेट फिक्सेटेड विद दिस फैक्ट. बहुत सब लोग फिक्सेट हो जाते हैं. ये ये फिक्सेट ऐसी होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपके स्कूल में कोई बच्चा है, फिर आप सोचोगे मैं तो उससे अच्छे मार्क्स लेके आता था, लेकिन देखो अब वो आगे निकल गया, अरे मैं तो उससे भी तेज था. अरे वो तेज था, कुछ था, उससे कोई मैटर नहीं करता. इन दी एंड उसने एग्जीक्यूट किया, वो कहीं पर पहुंच गया. फिर आप बस बातें बना सकते हो अपने क्लोज सर्कल में कि जब मैं स्कूल में था 12th में, तो यार ये तो मैं तो फर्स्ट आया था, ये तो टॉप 10 में भी नहीं था, अब देखो ये कहाँ पहुंच गया. वो कहाँ पहुंच गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ है. ही टुक द इनिशिएटिव, ही टुक द रिस्क, he did something different which no one else was doing, that's why he achieved that particular stage. तो यही सेम चीज है. आइडिया नहीं तो आइडिया की बातें करते रह जाओगे, आप देखोगे अरे ये तो अच्छा फ्लिपकार्ट, ये तो आइडिया मेरा था बुक्स बेचने का. अरे अमेजन, ये तो मेरा था. अरे जेप्टो, ये तो मैंने सोचा था कि डिलीवरी ऐसे होनी चाहिए. उसको सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ठीक है. सोचो, मतलब सोचना है, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं फर्क पड़ता. अगर वो एक्शनेबल आइडिया नहीं है, उस पर आपने कुछ किया नहीं ना, फिर उसकी कोई सेंस नहीं है. इट इज एज गुड एज जीरो. True, true, true. So thank you, sir. The board is open for questions from the students. If you have any questions, please raise your hand and ask your questions. If you are not able to unmute yourself, you can put your question in the chat box. I think I have. One of the students is asking, sir, initial ideas को test कैसे करें? How do we test initial, like कोई भी आइडिया हम स्टार्टिंग से बिल्कुल एग्जीक्यूट करने के पर्पस से शुरू नहीं कर सकते. We need to test the idea, right? तो इनिशियल आइडिया को टेस्ट कैसे करें? देखो आजकल के टाइम पे व्हाट हैपेंस इज, सी एक देयर इज अ फेमस कोटेशन व्हिच सेज दैट द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर. द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. पहले कोई भी आइडिया होता है ना, वो अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जब उसे थोड़ा सा एग्जीक्यूट करना पड़ता, थोड़ा सा उसका ट्रायल करना पड़ता, तो बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गेट टू अ पर्टिकुलर सैंपल सेट, ठीक है ना. कोई मेरे को आइडिया दो, मतलब ना ऐसे तो ब्लाइंड बताना में थोड़ा मजा नहीं आएगा. अगर किसी का भी कोई आइडिया दे कैन डिस्कस एंड लेट यू नो हाउ
the one who asked the Anyone, question. if you have any idea, you can share it now. अभी आपको live demo मिल जाएगा. It will हाँ, really help you guys. you can share the any idea. It may be vague, कुछ नहीं है, मैं उससे बता दूंगा ना फिर ऐसे, अदरवाइज डिफरेंट हम लोग आइडियाज. चोरी नहीं करेंगे पक्का. कोई नहीं करेगा, डोंट वरी. Okay. So one of the idea is selling lab grown kesar to gynecologist. So see, for example, आपका selling lab grown. I'll give you an example for this. I mean, similar. So one of our investors is Mr. Ryan Peterson. So Mr. Ryan Peterson is the CEO of Flexport. Flexport is a $9 billion enterprise based out of US. He's one of the most prominent individual in the supply chain domain across the globe. So what he did was, at an initial level, बिफोर स्टार्टिंग इज वेंचर, उनके दिमाग में आइडिया था, उनके पास कोई प्रोडक्ट था ही नहीं बना, जैसे कहना कोई भी प्रोडक्ट ही नहीं था उनका. उन्होंने ना एक वेबसाइट बना दी, सिंपल, कि एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये आपको इतनी एफिशिएंसी लाएगा, इतना लाएगा, इतना लाएगा. एनीवन हु इज इंटरेस्टेड कैन साइन अप, प्री साइन अप. जो स्टार्ट जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा आपके पास जाएगा. कुछ भी प्रोडक्ट बना ही नहीं था उन्होंने. उन्होंने कहा ऐसे समझते हैं क्या करना है, तो उन्होंने वो वेबसाइट बना दी. तो उन्होंने देखा उनको 500,000 साइनअप्स आ गए. बी टू बी साइड में 500,000 के साइनअप अच्छे होते हैं. अगर इतने लोगों को डिमांड है इसकी, इतने लोग इस चीज को चाह रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट शुरू किया. सो ही केम अप विद अ क्रिएटिव वे ऑफ, इवन विदाउट हैविंग अ प्रोडक्ट, ही विजुअलाइज द प्रोडक्ट. कॉन्सेप्चुअली उसने बोला ऐसे प्रोडक्ट में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा. है नहीं अभी तो कुछ भी. लेकिन जब उन्होंने देखा कि कितने, हाउ मेनी पीपल बाइट फॉर इट, किन लोगों को प्रॉब्लम है, तो उन्होंने देखा कि 500,000 लोगों ने साइन अप कर दिया. मतलब दिस इज मेजर प्रॉब्लम, दिस इज बी2बी सेगमेंट, तो अभी से बिल्ड करते हैं. दैट मींस ट्रैक्शन है Checking उस for चीज के लिए. demand. चेकिंग फॉर डिमांड उन्होंने किया. अब जैसे आपका है, जैसे लैब ग्रोन केसर है, आई एम नॉट अवेयर कि उसका कॉस्टिंग में फर्क है या उसमें कोई और चीज फर्क है. फॉर एग्जाम्पल आपने केसर बिल्ड कर दिया, एंड वाई यू टारगेटिंग ओनली गायनोकोलॉजिस्ट, वो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, बिकॉज केसर हैज गॉट मल्टीपल अदर यूज केसेस एंड मे बी मल्टीपल टीजीज. लेकिन सिंपल सा है ना, आप जस्ट डायल पे जाओ, 100 गायनोकोलॉजिस्ट को कॉल करो, ठीक है ना, वहां से ऐसे बोलो कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसकी ये प्रॉपर्टीज है, इससे सस्ता है, वॉट एवर इज योर टीजी. अभी मेरे को लग रहा है आपका टीजी वेल डिफाइंड नहीं है, पहली बात. ठीक है, बड़ा बड़ा नैरो टीजी है. यू टॉक टू मल्टीपल पीपल. जितने लोगों से बात करोगे, तो जितने लोग जो केसर बनाते हैं, जो बेचते हैं, उनसे बात करो कि आपका केसर जब आता है उसकी क्या कॉस्टिंग है, उसको किस तरीके के लोग लेते हैं. उन लोगों को कॉल करो, और बड़ा क्वांटम होना चाहिए. दिस इज मोर टुवर्ड्स अ बी2सी सेगमेंट, तो 100-200 लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी. तो जब भी आप लोगों से बात करोगे ना, यू विल गेट सम इनसाइट्स. कुछ लोग बोलेंगे कोई फर्क ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड हैड अ ड्राई फ्रूट स्टार्टअप. अब ड्राई फ्रूट इज वेरी कॉमोडिटाइज, तो उसमें उसने उसे स्पाइसेस डाल के, काली मिर्च लगा के, ये लगा के, अलग अलग फ्लेवर्स, पेरी पेरी करना शुरू करा. लेकिन वो उतना चला नहीं, क्योंकि उसका जो रेट है बिल्कुल स्टैंडर्डाइज्ड है, मतलब ना थोड़ा बहुत ही वेरिएंस पे चलता है, और लोग उस पर ज्यादा प्रीमियम देते नहीं है. तो उन्होंने बना दिया, बहुत अच्छा बनाया, पैकिंग अच्छी बनाई, ब्रांडिंग अच्छी करी, लेकिन उसका टीजी बहुत लिमिटेड रह गया. उसके यूज केसेस बहुत दिवाली दिवाली तक रह गए, तो साल भर का बिजनेस नहीं रहा. तो every idea, first of all, do as extensive work as possible. For example, in our case, before starting the venture, for 3 to 6 months, we were only talking to third party logistic companies, logistics heads, कि आपको क्या challenges आते हैं, क्या challenges आते हैं. जब आप 100, 200, 300 को देखते हो ना, 10, 20 देखोगे ना, तो और 10, 20 वो भी नहीं देखने कि आपके घर वालों को देखना है. यूजर्स होने चाहिए, ठीक है. वो घर वाले तो चलो आपके साथ हाँ ना कर सकते हैं. You have to find users and you have to find insights from them. So the more people you talk, the more stakeholders you talk, at an eventual level you understand. You need to understand the pricing, you need to understand the feasibility, you need to understand the demand. जब आप उसे कंसिस्टेंटली करते रहोगे ना, तो डेटा बोलता है. डेटा स्पीक्स इन सेल्फ. और डेटा को पूरा एनालाइज करोगे, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि इज इट अ बिग इनफ प्रॉब्लम टू सॉल्व. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी जरूरत भी है प्रॉब्लम, इतनी खास लोगों को चैलेंज, प्रॉब्लम बहुत सारी है जिंदगी में, लेकिन है कि इज इट अ बिग इनफ, इतना बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए कि उसको केसर को रिप्लेस करना है सिंथेटिक केसर से, या उनकी कंजम्पशन ही कितनी है केसर की. ठीक है, मे बी कोई केसर कुल्फी बनाता है, उसकी थोड़ी कंजम्पशन ज्यादा हो गई, लेकिन इनके यहाँ पर कितनी कंजम्पशन है कि उसमें 50 रुपए बच जाएगा तो बहुत ज्यादा बेनिफिट पड़ेगा. इज इट वेरी सब्सटैंशियल. ठीक है, और दूसरा, इसका मार्केट, इज द मार्केट साइज बिग इनफ. समझ लो, बोलो आपने पूरा कर दिया, आप बोला यार ये पूरी मार्केट 1 करोड़ की है. 1 करोड़ की मार्केट है तो आप क्या ही कर लोगे, या 10 करोड़ की भी मार्केट है तो आप क्या कर लोगे. एवरी स्टार्टअप वांट्स टू बी एंटरप्राइज रेडी, तो वो हजारों करोड़ का उसका पोटेंशियल होना चाहिए. मैं नहीं कह रहा कि आप पूरा कर लोगे, लेकिन जितना होगा तो उसी में से एक फ्रैक्शन आप कर पाओगे. स्टार्टिंग में भी धीरे धीरे ग्रो करेगा. आपका मार्केट साइज ही अगर 100 करोड़ का है, फिर आप समझ लो 1 करोड़ को टारगेट करोगे, फिर उसमें से अचीव में भी 50 लाख करोगे, तो आपकी फिजिबिलिटी नहीं आएगी. VCs वुड लुक इनटू स्टार्टअप्स विच आर एंटरप्राइज रेडी. मतलब उनको ये होता है कि
वो 100 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें, उनको चाहिए 2 यूनिकॉर्न बन जाए चाहे 98 फेल हो जाए, ठीक है, उसी से उनका पूरा निकल जाएगा। उनको ये नहीं चाहिए कि मेरे को यार 100 करोड़ के स्टार्टअप बनाने हैं, 100 करोड़ के रेवेन्यू के स्टार्टअप भी उनको नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि वो दे बेट बिग, ठीक है ना, दे बेट बिग, वो उनको एंड दे आर रेडी टू लूज मल्टीपल स्मॉल बेट्स, बट दे वांट दैट द बेट्स दैट दे पुट इन शुड बी एट एन लेवल की यूनिकॉर्न टाइप बने। तो आप बोलोगे मेरे को मेरा आप बोलोगे मैं 200 करोड़ का काम कर लूंगा एट से 10% प्रॉफिट या कुछ वाला, तो या 20% प्रॉफिट भी कर लूंगा, तो कहेगा आपका और कितना, बोला मैं इतना करवाऊंगा, फिर बोलेंगे कि कोई फायदा नहीं है। बोले ठीक है, मतलब आपका अच्छा है, बिजनेस वाइज अच्छा है, सब चीजें वाइज अच्छा है, ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट अ गुड बिजनेस टू हैव, बट इट इज नॉट अ स्टार्टअप वेयर वी वांट टू इन्वेस्ट। इट इज अ गुड, आप ऐसे करते रहोगे, स्केलेबल है, सस्टेनेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये उतना, ये हमारे को एक्साइट नहीं करता। फॉर एक्साइटिंग देम द टोटल मार्केट साइज, द टैम शुड बी बिगर एंड दे शुड हैव अ पॉसिबिलिटी, दे शुड हैव अ पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू द यूनिकॉर्न स्टेज। तो उनका फंडा ऐसे चलता है, इसमें कोई सही गलत की बात नहीं है यार, ठीक है ना, वो समझ लो हाई बिग बिग बेटर्स होते हैं। तो ये आपको ग्राउंड लेवल पे ज्यादा काम करना है, उससे आपको खुद This ही समझ is में आ जाएगा। another message. This is another message I think you have conveyed. Ki if we are getting rejection from one set of investors or any set of investors, that doesn't mean कि हमारा idea is not good. Idea might be good. That particular investor group might not have interest in this particular domain, or this particular idea, this particular type of ideas are might not be in their interest scale. Yeah. यस, सो राइटली सेड बाय गौरव। सो बट ब्रॉडर लेवल, देखिए सबका अपना, मेरे को रेड अच्छा कलर लगता है, किसको ब्लू अच्छा लगता है, किसी को कुछ और लगता है, सबके अपना टेस्ट है ना, दैट्स व्हाई ह्यूमैनिटी इज सो यूनिक एंड क्रिएटिव। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टर, स्केल तो सबको चाहिए, ठीक है ना, हो Hmm. सकता है उसका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, तो लेकिन अगर आप स्केल पे नहीं होगे तो सारे इन्वेस्टरों से रिजेक्ट हो जाओगे। स्केल होने के बाद भी, जैसे गौरव ने कहा, उसके बाद भी बहुत आपको 100 में से मे बी 70-80 लोग बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट कर लें, 10 आपसे बात करें, 10 में से 2-3 ही करते हैं ना। अब जितने भी स्टार्टअप्स हैं, हम कितने लोगों को पिच करते हैं, तो उनमें से इंडियन इन्वेस्ट तो 2-3 ही करते हैं ना, और हर बंदा इवेंचुअली, अगर आप देखोगे मोर और लेस द स्टार्टअप्स एवरी स्टार्टअप एटलीस्ट पिचेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू 100-150 स्टार्टअप्स, सॉरी वीसीज या इन्वेस्टर्स को Investors. पिच हाँ करता हाँ. है, फिर जाके उसमें 2-4-5 करते हैं। तो इसमें ना थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल का भी बहुत जरूरी है, वो पैशन और स्किल सेट के बिना आता नहीं, क्योंकि हर बार कोई बंदा रिजेक्ट करता है ना, तो मन को चोट पहुंचती है, लगता है अरे यार इसने रिजेक्ट कैसे, समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या है, बेवकूफ लोग हैं, इनको पता ही नहीं लग रहा, ऐसे बंदा सोचता है। तो यू हैव टू, आई मीन यू नीड टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। समझो कि जब भी रिजेक्ट भी हो या फिर उन्होंने इंटरेस्ट ना दिखाया, बोले बाद में देखेंगे, तो अंडरस्टैंड व्हाई दे फाइंड इट चैलेंजिंग, उनमें उसमें क्या कमी लग रही है, फिर उसको इंकॉर्पोरेट करो, सो दैट एवरी मीटिंग आइदर यू गेट इन्वेस्टमेंट और यू गेट फीडबैक, दोनों परस्पेक्टिव से वो क्रिटिकल हो जाता है। So, Abhi, Deepak Vasu has another idea. I think Deepak Vasu, if it will be great if you can convey your idea yourself because it's in bits and fragments. So, can you see this idea in the chat box? Life Flux is a mobile application that provides everything in single app. It can turn into service sector into daily wages for every Indian citizen. I think there are some fragments of his idea that he has posted in the chat, but अच्छा ठीक है, दीपक इसमें वो द फीडबैक दैट आई वांट टू गिव इज, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग, फोकस ऑन अ निश। इट डज एवरीथिंग फॉर एवरी इंडियन ना, वो सीधे पहले रिजेक्ट हो जाएगा। फोकस इन निश, अगर फॉर एग्जांपल इट इज प्रोवाइडिंग मैन पावर, तो मैन पावर में समझ लो मैन पावर या डेली वेजेस का करना है, तो डेली वेजेस में पहले आप स्पेसिफाई करो कि चलो फॉर एग्जांपल दिल्ली रहते हो, तो मैं दिल्ली में फोकस करूंगा, दिल्ली में फोकस करूंगा, तो मैं पायलट में एक लेबर चौक पे फोकस करूंगा, और मैं एक तरीके के लेबर्स को फोकस करूंगा, फॉर एग्जांपल सीमेंट वगैरह जो मतलब मिस्त्री मुस्त्री होते हैं ना, उन्हीं पे फोकस करूंगा। फोकस ऑन वन निश, उससे ऊपर फिर ग्रो करते रहो। सारी चीजें कर लूंगा वो ना होगी, वो आउटराइट रिजेक्ट होगी। फोकस ऑन वन निश, फिर उसमें ऐड करते रहना चाहे बाद में जैसे यू ग्रो, एंड फोकस ऑन वन रीजन। बहुत ज्यादा ब्रॉड बेस्ड करोगे ना, कुछ नहीं होगा, तो एक छोटा सा पायलट टेरिटरी बनानी है, पायलट निश बनाना है, उसे सक्सेसफुल करना है, देन यू रेप्लिकेट इट अक्रॉस मल्टीपल सिटीज, देन यू ऐड मोर कैटेगरीज इनटू इट। तो उस तरीके से करना है, इतना ब्रॉड बेस्ड मत करो। so there is a question by Nancy Roy. How did you motivate yourself after a lot of failures? That's a valid question. सी हाउ इट वर्क्स, हम तो यार इतने मोटिवेटेड नहीं भी थे 9 से, तभी वी डिसाइडेड दैट अच्छा हमको टू कमिट सुसाइड उतना नहीं था, और आई वाज, इट इज गुड फॉर्च्यून दैट समवन ड्रॉप्ड अ मैसेज एंड इट चेंज्ड माय थॉट। सी मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव टू बी, जैसे कहते हैं ना, आपको अपनी अपनी इज्जत बहुत वैल्यूबल होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं एक आई हैड रिटन अ हिंदी कोट विच सेड दैट कि
जिस इंसान को ये होता है ना कि मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, कि मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, जब उसका नाम नहीं होता, नाम खराब नहीं होना चाहिए जब उसका नाम नहीं होता, उसी का आगे जाके नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी समझ लीजिए से नैन्सी, अभी नैन्सी को कोई नहीं जानता, मतलब उसके दोस्त वगैरह छोड़ के उसका नैन्सी को कोई नहीं जानता। अब नैन्सी डज एवरी वर्क इन अ वे कि इफ आई एम डूइंग समथिंग, मेरी रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। मेरा ऐसे कोई कोई ना बोले कि नैन्सी खराब काम करती है, उसके क्वालिटी काम नहीं। तो जो बंदा जब उसका कभी नाम नहीं होता उस टाइम ये सोचता है ना, आगे जाके उसी का नाम होता है। तो मेरे केस में क्या है, इट्स वेरी सिंपल। नाउ आई हैव क्रिएटेड अ मिनिमम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई साइड कि मुझे इतना तो करना ही है। फिर मैं कोई भी चीज करता हूँ, आई पंच अबव माई वेट। अगर मैं 100 kg वेट में हूं, तो मैं 120 को पंच करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ मैंने ये अपॉर्चुनिटी उठा तो ली है, अब मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए, मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए, तो उसके लिए फिर मैं मेहनत करता हूँ। फिर मैं उसे अचीव करता हूँ। फिर तो एवरी टाइम आई ट्राई टू पंच अबव माई वेट, आई वर्क एक्स्ट्रा हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव दैट स्टेटस। अगली बार फिर पंच अबव द वेट, फिर एक्स्ट्रा हार्ड। फिर धीरे धीरे देयर इज सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दैट हैपेंस। इन सिंपलर वर्ड्स, द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा। हर चीज में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करते रहो, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करते रहो, औकात से बाहर पंच करते रहो, औकात से बाहर ट्राई करते रहो। और मेहनत भी करना है, सिर्फ पंच ही नहीं करना कि औकात से बाहर उठा लिया फिर किया नहीं कुछ। वो करते रहो और धीरे इवेंचुअली यू विल सी दैट देयर विल बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन यू एंड अदर्स। श्रुति, एंड आई हैव अ हार्ड स्टॉप इन अ मिनट और टू, आई हैव सम अदर मीटिंग्स। तो श्रुति। Yes, we can conclude with Shruti's question, and then we can have final concluding lines from you, and then we can, I think, close it off. श्योर। Yeah, thank you, sir. तो सर, यस। मैं 1 साल से एक अपना स्टार्टअप चला रही हूँ, ईगल एंटरप्राइज नाम से। ओके। एक एक वर्कशॉप के जरिए ही हमसे कहा गया था कि आप हम अपना बिजनेस आइडिया देंगे और जिनका सेलेक्ट किया जाएगा उनको कुछ फंडिंग दी जाएगी, उनके थ्रू करेंगे। तो मेरा जो था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे प्रोडक्ट था, और मेरा प्रोडक्ट है जूट बैग का। तो मैं वो ओके। प्रोडक्ट बना रही हूँ, और मैं दरभंगा बेस, बिहार में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ ओके। पे मेरे आई नो। अच्छे चल रहे हैं। मुझे दिक्कत आया था अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करने में, हम्म। क्योंकि इसमें अलग अलग तरह का बैग, अलग अलग साइज और अलग अलग मटेरियल आ जाता हम्म। है, जैसे कस्टमर कस्टमाइजेशन कराता है। तो मैं अपना हम्म। कॉस्टिंग सही ऐड नहीं कर पाती। कभी कभी मुझे बनाते बनाते बिलिंग के टाइम में लगता है कि इसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट बचा नहीं है, जितना का मैंने लगाया उतना ही मेरे पास आ रहा है। तो इसको कैसे हम्म। सुधार सकती हूँ? और मैं अकाउंट की स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मुझे इसका में नॉलेज नहीं है। तो क्या बिजनेस करने से पहले मुझे अकाउंट्स पढ़ना चाहिए था नहीं नहीं पहले? नहीं नहीं, देखिए देखिए, पढ़ा पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सी व्हाट हैपेंस इज, देखो, यूनिवर्स लव्स अ स्टबर्न हार्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप जाओगे ना, आज के टाइम में इंटरनेट है, आप किसी ना किसी से पूछोगे, पीपल वुड बी देयर टू गाइड यू। अगर आप पैशनेट हो ना कि मेरे को समझना है, तो कोई ना कोई बंदा आपको गाइड करेगा। प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस यूथ आइडियाथॉन कैन कनेक्ट यू विद मेंटर्स। वो मेंटर्स आपको, आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके जाओगे, वो आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे प्राइसिंग निकाल सकते हैं, क्या चीजें कर सकते हैं। आपको ज्यादा डोर्स नॉक करने हैं, लिंक्डइन में जाओ, लोगों को मैसेज डालो। अपने जो लोग बिहार से हैं, दरभंगा से हैं, कोई ना कोई बंदा बहुत अच्छी पोजीशन में होगा, उससे रीच आउट करो। मतलब खुद सीख तो सकते ही हो, खुद सीखना तो बाय डिफॉल्ट है, खुद हाँ। सीखना, लेकिन इवेंचुअली, लेकिन इवेंट वो तो चलो मैं बोल रहा हूँ हाँ ठीक है, ये नहीं आता तो सीख लो। बट इवेंचुअली हर हम्म। चीज नहीं सीख सकते ना, हर चीज में आपकी एक्सपर्टीज भी नहीं होगी। तो इट इज बेटर कि हम्म। जो आपके कोर बिजनेस से अलग चीज है, आई यू रीच आउट टू मेंटर्स, और गेट सम एडवाइजर्स ऑन बोर्ड, जिनको आप कहो कि मेरे को आप इस चीज में हेल्प कीजिए, क्योंकि वो आपका टाइम भी बचाएंगे और बहुत सारा पैसा, और डिसीजन मेकिंग आपकी ज्यादा बेटर होगी, आप कम गलत डिसीजन लेंगे। नहीं तो गलत डिसीजन लेके स्टार्टअप इधर से शुरू से खत्म भी हो जाता है, अगर कुछ ज्यादा गलत डिसीजन ले लें। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट अ क्लोज सेट ऑफ एडवाइजर्स, मेंटर्स, वेयर यू कैन रीच आउट टू फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प एंड एडवाइस। वो आपको असिस्ट करेंगे या किसी से कनेक्ट करेंगे। हर चीज खुद सीखने की जरूरत नहीं है। वन मोर क्वेश्चन सर। यस प्लीज। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा बेसिकली हमको ऐसा प्रोडक्ट लाना था जो इको फ्रेंडली में ना कुछ ज्यादा हेल्प करे। तो एक आइडिया और मेरे दिमाग में था कि जब हम कोई डेकोरेशन करते हैं, जैसे इवेंट में हम कोई डेकोरेशन करते हैं ना, उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो मैं उसके जब ऐसा अल्टरनेटिव लाना चाहती थी। तो ये जो मेरे पास आइडिया है, क्या क्या मुझे ये आइडिया अभी जो मैं काम कर रही हूँ साथ में काम करना चाहिए, या एक पे ही मुझे अभी फोकस करके इसका बेस स्ट्रांग करना चाहिए, तब उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहिए? नहीं, पहले तो एक ही करो यार, इतना एक को करना भी इतना आसान नहीं होता। जितना आप ज्यादा चीजों करोगे ना, लेजर क्यों काम करती है, बिकॉज लेजर इज फोकस्ड। वो जितना माइन्यूट फोकस पर रखोगे उतना उसका इम्पैक्ट रहता है। चार चीजें करोगे तो चारों की चारों चीजें खराब हो जाएंगी, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो एक ही चीज पे पहले फोकस करो। अगर वो लगता है कि वो उस चीज में आपको लग रहा है पोटेंशियल नहीं है, तो उसको फिर ड्रॉप करो, फिर दूसरी चीज करो। लेकिन
दो चीजों में हाथ अभी डालना चाहिए ही नहीं, एक नहीं। चीज के अंदर भी बहुत नीश पे काम करना चाहिए। So yeah, thank you so much, sir. And It's guys who okay. want to connect with Arun Pandit sir later on, he has shared a message in the chat box. If you can see, he has shared about his website. You can just connect with him through the website. There are several channels through which you can connect with him and ask your queries. Otherwise, you can send your queries to us, and we'll convey them to. I would have loved to take the discussion forward. मैंने अपना contact details यहाँ पर डाल दिया, otherwise you can connect over LinkedIn या Instagram वगैरह, कहीं पर भी जहाँ पर भी आप प्लेटफॉर्म पे हो वहां से मुझे कनेक्ट कर लेना. Just mention that you are part of this workshop or this session and I'll assist you wherever possible. Cool है? Yes, sir. Sure. Thank you so ठीक है. much, sir. Thank you so Thanks much. a lot, Gaurav. Thank you everyone for being here. Thank you. And have a great day ahead. Take care. Bye.